मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है एज एन एक्टर कि मैं हर कैरेक्टर की सच्चाई बयां करने की कोशिश करूं अपने काम के द्वारा। और जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई भी थी उस टाइम से मैं भूल चुका था कि ये एक असली इंसान की कहानी है। उस टाइम से मैं भूल चुका था कि ये किताब के ऊपर है। मेरे लिए स्क्रिप्ट मेरी सच्चाई थी, वही दुनिया थी, वही इंसान था। कल को अगर नीरज पांडे कुछ टीवी पर बनाते हैं और मेरे को बोलते हैं 2 सीन के लिए भी आ जा, मैं खुशी खुशी आ जाऊंगा। मेरे लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल मैटर नहीं करता, मेरे लिए अच्छा काम करना मैटर करता है, क्योंकि उसी से आपको काम करने का मजा आता है और आपका जो क्राफ्ट है वो ग्रो होता है। Hey guys, this is Karan Tacker. You're watching my interview on Mirchi Plus. Hi, this is Samina Shaikh here on Mirchi Plus और मेरे साथ में आज एक ऐसे एक्टर है जिनको रिजेक्ट किया गया है, पर वो रीज़न जानकर आप खुद थोड़ा शॉक होने वाले। सो वेलकमिंग हिम ऑन मिर्ची प्लस, वेलकमिंग करण टैकर ऑन मिर्ची प्लस। Thank you. And I'm myself surprised that you were rejected for something very weird, like being looking very good and fit. ऐसे कैसे हो सकता है? I was also wondering यार, what are you good talking looking about? and fit दिखने के लिए कैसे कोई रिजेक्ट कर सकता है आपको? नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। आई थिंक जो हाउ डू आई से इट विदाउट अगेन साउंडिंग लाइक मैं अपनी खुद की पढ़ाई कर रहा हूँ, बट आई फील लाइक कैरेक्टर वाइज अगर आप ज़्यादा रिलेटेबल नहीं लगे तो आपको मेकर्स बोलते हैं यू आर टू गुड लुकिंग फॉर द पार्ट और यू आर टू फिट फॉर द पार्ट। तो दैट्स वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम, बट इट्स बीन क्वाइट अ बैटल, आई वोंट डिनाई इट, बट आई होप कि चीज़ें बदल रही हैं। कि इनफैक्ट इवन जब मैंने खाकी भी किया था, मुझे याद है कि मेरे ही जो एक्टिंग के टीचर हैं जिनके साथ मैंने वर्कशॉप की थी, उन्होंने मेरे को ट्रेलर के बाद फ़ोन किया घबराए हुए, यार तूने बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं, यार तू बिहार के पूरे मिलियो में फिट कैसे होगा, क्योंकि तू दिखता ऐसा है। तो मैं कहा सर एक बार आप देखो तो सही कि बैठा कि नहीं बैठा है। तो या आई स्टिल आई गेट दैट अ लॉट, बट आई होप दैट आई मीन the work that I do changes that and people can see beyond the way I look externally. But did you get this comment from your friends के बिहारी मुंडा यानी literally पंजाबी मुंडा बिहारी बना है? I mean like from your family members also, because it's very different, both the characters, your personality being quite different as compared to the character you're playing. ऐसे compliments? Yeah, of course. Honestly my parents also very stressed about it. Yeah. कि ये कर लेगा ना, मैं कहा कर लूँगा, डोंट वरी, मतलब अटेम्प्ट तो करूँगा, उसके बाद आई डोंट नो हाउ इट्स गोना लैंड। बट या वो एक डेफिनेट अदर देन नीरज पांडे, एंड आई लव हिम फॉर दैट बिकॉज ही हैड एब्सोल्यूट बिलीफ इन व्हाट ही वाज ऑफरिंग टू मी। इन फैक्ट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम आल्सो, आई रिमेंबर कॉलिंग हिम अप आफ्टर 1 or 2 days ऑफ शूट के, and I actually was like a little like I was like सर ये आपने क्या सोचा क्या मेरे को देने से पहले, and he's like कोई बात नहीं तू कर लेगा, इतना ही बोला उन्होंने मुझको। तो आई थिंक उनका जो बिलीफ है ना, दैट सुपरसीडेड एवरीबडी एल्सेस चैटर अराउंड मी, एंड दैट्स ऑल दैट आई वेंट विद बिकॉज ही इज समबडी आई लुक अप टू इमेंसली एज अ पर्सन, एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोफेशनल, एंड व्हेन समबडी लाइक दैट इंस्टिल्स फेथ इन यू, उनका जो यकीन था उस यकीन ने मुझे अपने आप में यकीन दिया कि मैं कर सकता हूँ। ये आपकी सेकंड प्रोजेक्ट है विद नीरज पांडे। यू हैव वर्कड विद हिम इन द पास्ट आल्सो, बट दिस वन इज आई वुड से मोर क्रूशियल ऑल्सो बिकॉज आपने एक ऐसे किरदार को प्ले किया जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, द IPS ऑफिसर, एंड ही हिमसेल्फ अप्रिशिएटेड योर रोल एंड द एंटायर नेटफ्लिक्स सीरीज। Amit actually said like it's such a good flick itself, it's such a good series to watch because the way he wanted has come out. So how was that for you? Were you constantly being conscious कि ये रोल उस किरदार को होना चाहिए बराबर? Yeah, I'll be honest, मैंने वो प्रेशर कभी नहीं लिया कि क्योंकि ये रियल लाइफ इंसान के बारे में है तो मुझे वो प्रेशर लेके काम करना है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है एज एन एक्टर कि मैं हर कैरेक्टर की सच्चाई बयां करने की कोशिश करूं अपने काम के द्वारा। और जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई भी थी उस टाइम से मैं भूल चुका था कि ये एक असली इंसान की कहानी है। उस टाइम से मैं भूल चुका था कि ये किताब के ऊपर है। मेरे लिए स्क्रिप्ट मेरी सच्चाई थी, वही दुनिया थी, वही इंसान था, एंड मैंने उसी को माइंड में रखते हुए पूरा कैरेक्टर प्ले किया। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि आप सिविल सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन का प्रेशर या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश मैंने भी की है, प्लस मुझसे ज़्यादा टीम ने की है, क्योंकि उनके लिए दुनिया क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है जो करेक्ट लगे, कि हम IPS ऑफिसर्स की लाइफ को करेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करें, ऑनेस्टी से रिप्रेजेंट करें, ना ही उनको अननेसेसरीली सेलिब्रेट करें और ना ही उनको अननेसेसरीली किसी गलत दिशा में दिखाएं। तो वो चीज़ का डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। प्रेशर नहीं कहूँगा, इट वॉज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज मेन इन यूनिफॉर्म और वीमेन इन यूनिफॉर्म फॉर दैट मैटर
इतना अनकंडीशनल जॉब है कि यू नो यू आर स्टैंडिंग इन द लाइन ऑफ फायर, यू नो यू आर क्लीनिंग द सोसाइटी इन द वे, यू आर टेकिंग अकाउंटेबिलिटी टू रन अ होल कंट्री ऑफ ऑलमोस्ट 2 billion people. So I feel like that much you most definitely owe it back to them. But at the same time, बिहार जैसे दिखाया जाता है, you know, most of the times, you know, in films, it's all the more, you know, corrupt place, or you know, people have this perception. आपने बोला है कि ऐसे नहीं है, you know, you have also said like real life में it's quite different when you have interaction, but you know, still corruption still exists in a lot of places. It's not only Bihar, you know, but at the same time एक वो image है बिहार की. What you have to say? Plus crimes वहाँ पे बहुत होते हैं. देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, करप्शन किसी को नहीं पसंद, चाहे वो बम्बई में हो, चाहे वो बिहार में हो, Correct. या हमारे 25 से 27 स्टेट्स में हो, तो इट्स करप्शन नोबडी एंजॉयज, नोबडी लाइक्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट. डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जो कहानी बता रहे हैं वो बिहार के 2000 की कहानी जिसमें एक गैंगस्टर और एक पुलिस की कहानी है, तो उसमें डेफिनेटली किसी किस्म का करप्शन होगा. मेरा ये मानना है कि आपको रियलाइज़ करना है कि एज एन ऑडियंस कि एक कहानी पूरे शहर का रिप्रेजेंटेशन नहीं होती. आज अगर बम्बई में किसी वक्त पर अनफॉर्चुनेटली बम ब्लास्ट हुए थे या ताज पर अटैक हुआ था या इस पे एक अंडरवर्ल्ड का एक सर्टेन इन्फ्लुएंस है, तो पूरा शहर ये नहीं है. ये शहर की 3-4 ऐसी कहानियां जो एक फिल्म मेकर दिखाने की कोशिश करता है, तो पूरे शहर की छवि नहीं बननी चाहिए. तो उसी तरीके से बिहार की ये छवि नहीं बननी चाहिए थी और एक हमारे शो से भी नहीं बननी चाहिए. इनफैक्ट मुझे कहीं लगता है कि हमने बिहार को बड़ी खूबसूरती से दिखाया. आज तक आपने कभी बिहार को इस टेक्सचर में, इस कलर में देखा ही नहीं होगा. क्योंकि हम जब भी बिहार की कोई कहानी देखते हैं तो बहुत ही ग्रंजी, बहुत ही येलो टोन, बहुत ड्राई, बहुत गाली गलौज, बहुत ज़्यादा गरीबी उसमें ही दिखाते हैं. हमने बिहार को बिल्कुल वैसा नहीं दिखाया. हमने इनफैक्ट हमारे जो हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम उन महीनों में जाएं जिन महीनों में बिहार सबसे ज़्यादा हरा दिखता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हरियाली दिखती है, कि जो लैंडस्केप वो खूबसूरत लगे. वो बिहार एक्चुअली बहुत खूबसूरत है. हमने ज़्यादातर शूटिंग झारखंड में की है, विच वॉज अ पार्ट ऑफ बिहार. और बिहार में और वहाँ पर झारखंड में बहुत ही खूबसूरत शहर है मकलौस्कीगंज. रांची कितना खूबसूरत है, डाल्टनगंज कितना खूबसूरत है, और वहाँ पे जेन्युइनली हरियाली कितनी है, पहाड़ कितने अच्छे हैं वहाँ के. यू नो हम हमेशा जैसे सोचते हैं कि पहाड़ नॉर्थ में ज़्यादा अच्छे होते हैं, लाइक व्हेन यू गो फर्दर अप नॉर्थ, यू नो टू शिमला और उत्तराखंड इन जनरल, बट मकलौस्कीगंज के पहाड़ कितने अच्छे थे. तो हमारी कोशिश ये थी कि हम बिहार को जैसा बिहार है वैसा दिखाएं, ना कि जो बिहार की छवि है. तो वो कोशिश थी. उम्मीद है कि यू नो लोगों का भी थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ होगा आफ्टर वॉचिंग आवर शो. Karan, it took you 7 years to come out of, you know, TV industry completely, but at the same time you had a different fame altogether. Like even now, if I revisit your characters, it had that popularity, that you know, that impact you had left. You know, इतना बड़ा decision आपने क्यों लिया to move out? Was it also because you know somewhere felt, because you also said recently कि you felt maybe you'll get stuck, you know, वहाँ पे growth as such नहीं होगा. What were your thoughts? देखिए मैं हमेशा अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैं एक्टर हूँ, क्योंकि ये शौक़ है. आप अपने शौक़ के पीछे अपना करियर बना रहे हैं. तो मेरा मानना है कि जब आप अपने शौक़ का करियर बनाते हैं तो मेहनत ज़्यादा करना बनता है, क्योंकि आप वो बड़े चंद खुश नसीब लोगों में से जिनको अपना काम करने में मज़ा आता है. तो मज़ा जो है वो बहुत ज़रूरी है इस काम में करना, क्योंकि 18-18 घंटे हर दिन काम करना थोड़ा मुश्किल है. प्लस बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है. आपकी ना कोई सोशल लाइफ होती, ना फैमिली लाइफ होती. सो व्हेन यू आर पुटिंग इन सो मच इनटू योर करियर, यू वांट टू मेक श्योर यू आर हैविंग गुड टाइम व्हेन यू आर शूटिंग. क्योंकि क्या है, कोई भी चीज़ आ जाए उसका आउटकम आपके हाथ में नहीं है, बट आपका शूटिंग एक्सपीरियंस का जो मज़ा है, एक कैरेक्टर को क्रिएट करने का जो मज़ा है, वो चीज़ आपके हाथ में है. और वही चीज़ एज अ करियर मेरे हाथ में. तो जब मैं टेलीविज़न करता था, मुझे याद है कि मुझे लगा कि यार अब इतने कैरेक्टर्स करने के बाद टीवी में क्राफ्ट को लेके मेरी ग्रोथ इतनी ही है. जितना मैं टीवी से सीख सकता था मैं सीख चुका हूँ. इससे ज़्यादा मैं सीख नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जो मॉडल है टीवी का वो ऐसा है. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा एक स्टेप बैक ले लेता हूँ एक्टिंग से. मैं होस्टिंग ट्राई करता हूँ. तो मैंने काफ़ी सालों तक होस्टिंग की, और उस टाइम पर या तो फिल्में थी या टीवी था. फिल्मों में आपकी एंट्री बड़ी डिफिकल्ट थी. मैं बात कर रहा हूँ लिटरली अबाउट 7.5 साल पहले की बात, जहाँ पे यू नो यू हैड द बिग guns who were like running the industry, like the Khans and whoever, you know, so kind of finding a space was very difficult. In fact, the only time there was newcomers that were introduced into the industry was thanks to Karan Johar when he did Student of the Year. That's when the younger lot of Varun Dhawan, Siddharth Malhotra and Alia Bhatt sort of came in.
and the industry little bit opened up to the idea that oh you can have younger actors who can become stars, but nobody was accepting actors from television. TV को तो मतलब बहुत ही एक अलग नज़रिए से देखा जाता है. तो luckily OTT came into existence, जहाँ से मेरी एंट्री हुई into good work, and today I can very happily say as an actor कि इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे बड़ा शौक है फिल्मों करने का, but आज और मेरा तब भी यही शौक था, मुझे अच्छे मेकर्स के साथ काम करना है, चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे वो टीवी पर हो या वो चाहे OTT में हो. कल को अगर नीरज पांडे कुछ टीवी पर बनाते हैं और मेरे को बोलते हैं 2 सीन के लिए भी आ जा, मैं खुशी खुशी आ जाऊंगा. मेरे लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल मैटर नहीं करता, मेरे लिए अच्छा काम करना मैटर करता है, क्योंकि उसी से आपको काम करने का मजा आता है और आपका जो क्राफ्ट है वो ग्रो होता है. Karan, Bihar, I mean this film which Khakee is, you know, the series is, उसमें casteism पे भी काफ़ी emphasize किया गया है. In fact, you have also spoken about it, you know, how that exists. Right. Even in 2022, you know, when the world is moving to different directions altogether, all these things exist. और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में exist करता है. Even like, you know, when you go to US, वहाँ पे race का होता है discrimination. I cannot go, you know, down, you know, to a certain, you know, area because वहाँ पे ऐसे, you know, there are certain, you know, kind of people. वहाँ पे बहुत बड़ा revolution होता है, Black Lives Matter. Revolution, yes, and you know, I just cannot go, you know, like even like in my recent travel, I was being warned कि इस direction मत जाना because there you don't know there are people out there who can just be like that. But at the same time, they are fighting for their own things, you know. And casteism exists in India. There is so many discrimination which keeps on, you know, taking place. What are your thoughts on that? My thoughts on it is that it's the reality of the society. So it would be very naive to be ignorant towards it. What if you've seen Khakee? Even in Khakee, what we're trying to do is that we're trying to show that how much it bothers somebody that their caste decides everything else in their lives. We've touched upon it very softly because the show is not just about that. But मेरा खुद का एक सीन है जहाँ पर चूँकि मेरा कैरेक्टर राजपूत है और गैंगस्टर एक अलग कम्युनिटी से आता है, तो मैं उसको मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं इसलिए आई एम नॉट गोइंग एंड कैचिंग हिम, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम कि मतलब यू नो कि I'm a human being at the end of the day, right? For me, caste and all doesn't matter because even as a Bombay kid, today I'm so cosmopolitan that अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा धर्म क्या है, तो मैं बोलूँगा मेरा धर्म बॉम्बे है. Correct. मेरा मंदिर बॉम्बे और मेरा मतलब मेरा कोई रिलीजन नहीं है. मैं कोई एक मंदिर में नहीं जाता. मैं कोई पंजाबी तो मैं ज़रूरी नहीं कि मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ या मैं हिंदू हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि मैं यू नो मॉस्क में नहीं जाता या मैं चर्च में नहीं जाता. सो आई फील लाइक जब आप बॉम्बे शहर से आते हैं तो आप बहुत कॉस्मोपॉलिटन होते हैं. तो मेरा कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है. वो काफ़ी हद तक बहुत कॉस्मोपॉलिटन है. तो इवन ही गेट्स वेरी अफेक्टेड बाय द आइडिया ऑफ दैट हाउ इज कास्टिज्म कमिंग इनटू दिस. सो इवन व्हेन आई एज एन एक्टर रेड इट, आई वाज लाइक वाओ यार, यू नो that there is such heavy casteism there. It must be really tough on people who are on the facing end of it. So I can empathize with them, and of course, you know, via the communication that we do from the work that we do as actors or makers, it's a very small step in that direction, but let's hope that it really creates an impact and people start looking at human beings just as human beings, you know, because everybody's blood's red at the end of the day, right? Nobody's blood has a different color. So that's how I look at it, and that's how I understand humanity. Have you watched Khakee, which was a film which featured Akshay Kumar, Abhishek Bachchan? 100%, but I watched it when I was really young. Because when the title of this movie came out and when I saw the trailer, I actually felt like maybe it's the OTT version. Forward. Yeah, it's a carry forward. No, it's not. It's an absolutely entirely different entity. It's based on a book called Bihar Diaries, which is written by IPS Amit Sadh. And the things what he has been through. Correct. To find this one specific gangster that we're talking about. So no, it's not based on the film at all. That's an amazing film, you know, with Mr. Bachchan, Akshay Kumar. But yeah, this is a brand new animal. And you also spoke like not off late, but you know, few months ago, you spoke about, you know, dealing with depression and how, you know, it was not that easy to come over. But at the same time, do you feel that, you know, there is this necessity of being surrounded with genuine people at times, because we are in that fast-paced world. We don't get to see what is happening behind you, and sometimes, you know, maybe it does take a toll on you. That after when you feel it, you literally feel it all on your own. You know, what are your thoughts on that? Oh well, I mean, there's no denying that you are always seeking genuine people, whether you're an actor or you're somebody behind a desk on doing a job. I feel हर इंसान सच्चे इंसानों की तलाश में रहता है.
वो सच्चाई आप दोस्तों में ढूंढते हो, अपने पार्टनर्स में ढूंढते हो, अपने परिवार में ढूंढते हो. So yeah, that will always remain, you know, devoid of the fact that, let's say, if I went through a bad phase in my life or not. Having said that, you know, the industry that we come from there is no denying it's very tough. I'm not saying that other industries aren't tough, but unfortunately, as an actor specifically, there is very little in your own control. You rely on a maker to give you a job. You rely on the audience to accept what you've done. The acceptance of that is what decides if you're going to get a job after this and of what level. So it's not an easy place to be. Having said that, of course, you know, I mean, genuine people is I think the most basic requirement of a human being's life. I've been very lucky, I won't deny it, that I am allowed to live with my family. My family still wants to live with me. And I feel that grounding and that rooting is the most genuine equation I have in my life. And that is my biggest and undeniably the only emotional support that I look forward to on a bad day. Do you also feel that it's quite somewhere, you know, I would not say that, you know, oh, family should be around you, you know, 24/7, but somewhere it's quite good, you know, it's safe in a way that, you know, you have family around you, Yeah. because when you go through certain things, they are there, you know, they are there to, you know, hold your back. Yes. Maybe your professionals cannot help you to a certain extent, they can, but, you know, not to a certain extent. Maybe it's very good to have them 100%. around rather than, you know, staying alone. यार and all. इंग्लिश में कहावत है, blood is thicker than water. Yeah. और वो मेरे लिए बहुत एप्लीकेबल है. आई फील कि जितना इंटरेस्ट आपका परिवार आप में लेता है, उतना आपके दोस्त आपके लिए ले नहीं सकते, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी में दिक्कतें चल रही हैं, वो उनकी अपने इक्वेशंस चल रहे हैं जिसमें वो काफ़ी इन्वॉल्व हैं. सो आई डोंट ब्लेम दैट, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट इवन बीइंग साइलेंट इन योर हाउस, नोइंग you have parents in their room, you've got your sister in one room. Yeah. For that matter, your home staff also becomes family. True. You know, my driver's been with me for 8 years, if I'm not mistaken. Just knowing that he's driving my car silently is very emotionally comforting. So I feel like you know you develop family like that, and that really matters. Like मैं जब घर आता हूँ ना कभी-कभी on a bad day, and I know कि you know, my mom's in her room, probably on a mobile phone watching TV. My dad's in his study on the computer, and I have to walk through all those rooms to get to my room. Yeah. So just like taking a peek in and seeing, oh, my dad's working on the laptop, saying, hi dad, how are you? Hi mom. Just that much is so emotionally comforting. True. So yeah, I won't take that away. I feel like I'm very, very lucky to have my parents with me, and I'm very lucky that I get to live with them here. And what's next for you in terms of your projects? What are you working on? Well, there's a whole bunch of things, quite frankly. You know, 2023 is a very interesting year for me. I unfortunately can't talk about it, you know, thanks to contracts being as tight as they are. But I'm really looking forward to working in 2023. I miss being in front of the camera. I won't deny it. I wish as an actor, all I could do is go out there, learn my lines, go make a character, shoot it, come back home and just go to sleep. And that's what 2023 looks like. So I have a bunch of things that I've sort of locked on. And as and when the time's right, you know, I'll keep talking about it. So thank you so much for your lovely time, Thank you. and it was very lovely Thank you. chatting with you.